Samantha is the Yeah, good evening, how are you? Share the picture, right? Yeah. Oh, have you done the homework? Yes. What was the homework? Question answer from 1 to 6. Have you written? Yes. Sure. Now, no question I will give you instead. I told you that. Good. Still in handwriting. Put it in the bank also. Back also, yes. Good. One again, no homework. This done. Okay. The next one. Show. Thank you. EJB. Okay, good. Good handwriting. CBSE also. Very good. Just the same, yeah. Same there, huh? Okay. See, both of you are having wonderful handwriting, but only thing is you are writing clearly, huh? Yeah. Now one test. Test क्या है मालूम है? You have to write down, okay, 2 answers. Question number 1. Right? Question number 1. Differentiate between solids, liquids, and gases. 3 points each. 9 minutes. Explain what sizzling food, what sizzling food flavor come to our nose. Even if we are sitting quite away, yes or no? Yes. Explain. Okay. Question number 3. Explain rigidity, kinetic energy with respect to matter. Clever? You can write in your own words. Now, why not? Revise. Okay. But revise करो. दोनों question revise करती हूँ.
वही क्वेश्चन रिवाइज करो, जो क्वेश्चन दिया है ना पीछे, सेम क्वेश्चंस आर गिवन ओवर देयर इन द बुक। After doing right now. हाँ राइट, कहाँ लिखा आपने क्वेश्चन? हाँ उधर ही।
Answer. You done? Good. Last question then. Last question. Okay, carry on. Okay, done. Okay. I will make you read out. Wait. Like concept करने के बाद हम लोग दोनों चीज read करते हैं. Answers as well as question. So then, can I revise the answers? Once like if it's correct or not. Why not? Okay. चलो. Now revise. थोड़ी देर के बाद revise उसको read out करें. ठीक है ना? Okay. Now let us come. Last question किया. नहीं ये वो पढ़ना है. हाँ पढ़ लो आराम से. Exam में 9 marks.
नहीं तो नहीं आएगा, 2-3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा, 9 मार्क्स तो बिकॉज ये क्लास टेस्ट है, just to motivate you, okay? Done na? Okay. Now let us come to effect of change, temperature change on the states of matter. Now, what is the effect of change of temperature? There are two factors. One is temperature, another is pressure. अभी यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम ले लेते हैं. What is this diagram? On this y-axis, जो vertical line रहता है उसको y-axis, you know that, ना? और जो horizontal line रहता है उसको x-axis. ठीक है? तो x एक्सिस में हम लोग हीट प्लॉट करेंगे और y एक्सिस में टेम्परेचर. ठीक है? अब तुम्हारे पास सपोज तुम्हारे पास कुछ सॉलिड है 1 किलोग्राम, दैट इज आइस ओनली. ठीक है? अब ये सॉलिड को तुमने -1 -2 या जो भी टेम्परेचर पे रखा है उसको तुम हीट करते जा रहे हो. जैसे जैसे हीट करते जाते हो उन लोग का जो एनर्जी है अंदर मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ता जाएगा, यानी दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. सॉलिड से या सॉलिड से वो लोग वाइब्रेट करना शुरू करें, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और वाइब्रेशन बढ़ेगा. ठीक है? एक टाइम है कि किस पूरा सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी है एक हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाए. उसके बाद ये जो एनर्जी तुम कंटिन्यूअसली सप्लाई करते जा रहे हो will not further raise the kinetic energy. What it will do, it will start changing this particular solid into liquid and start melting. उस टाइम टेम्परेचर आपका कांस्टेंट दिखाई देगा थर्मोमीटर. Means what is happening over there? All the particles which are actually what have acquired energy, they are trying to break loose, and whatever energy we are supplying further, जितना भी energy है further supply करते जा रहे हैं. Look at temperature change नहीं आ रहा. What is happening? We are changing the potential energy. Potential means उन लोगों का जो attraction है उसको weak कर दे रहे हैं. और उस टाइम जब अट्रैक्शन वीक कर रहे हैं तो हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी. बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विद मोशंस, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड विद अट्रैक्शंस. तो अट्रैक्शंस धीरे धीरे क्या हो जाएगा? लूज होते जाएगा, सॉलिड में टूटते जाएंगे. वो लोग जो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते जाएंगे. और जब पूरी तरह सॉलिड का अट्रैक्शन पूरी तरह लिक्विड स्टेट तक आ गया तो उस टाइम क्या हो जाएगा? The solid has fully converted into liquid, and whatever energy we have supplied, suppose यहाँ पे 40 कैलोरीज एनर्जी लगा, हाँ इधर से स्टार्ट किए, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा 120 हुआ, तो टोटल अगर तुमने 1 ग्राम लिया होगा अगर ये आइस का तो कितना लगा? 120 - 40 यानी 80 कैलोरीज पर ग्राम. यस और नो? To convert that ice into what? Liquid. पर उन्होंने डेफिनेशन में बोला 1 किलोग्राम आइस, तो अगर 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी लग रहे हैं तो पर किलोग्राम के लिए उसको मल्टीप्लाई बाय 1000, व्हाट इज दैट? 80,000 कैलोरीज. यानी 1 किलोग्राम के लिए आपको 80,000 कैलोरीज लगेगा इधर. हाउ वी एक्चुअली व्हाट से आंसर वी हैव बर्न सो मेनी कैलोरीज. देयर आर सम स्मार्ट वॉचेस नाउडेज. हां, उसमें तुमको कितना स्टेप्स चले आप, कितना कैलोरीज बर्न हुआ वो आपको दिखेगा. वैसे यहाँ पे कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, यानी हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, which is expressed in calories per kilogram. That's why we say, for example, ये पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. Therefore, liquid water at the same temperature is having more amount of heat rather than what? Cold water, ice in the same temperature. क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा हीट 80 कैलोरीज आ गया है. तो जब तुम 80 कैलोरीज आप इसमें पर ग्राम लगा देंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड. दैट मींस लिक्विड में ओके 80 कैलोरीज ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन स्टेट ऑफ मैटर इन द बॉडी. दैट्स व्हाई वी हैव व्हाट अ पर्सन लाइक फुटबॉल प्लेयर sprains his leg, क्या लगाते हैं? आइस पैक्स.
वाटर पैक्स नहीं, ये नहीं, आइस कोल्ड वाटर नहीं लगा, क्यों? आइस कोल्ड वाटर में 80 कैलोरीज ज्यादा है, तो उसको जो क्या होता है, कूलिंगनेस नहीं मिलेगा, कूलिंग नहीं मिलेगा, और उसका जो मसल पेन है, मसल जो वहां पे स्ट्रेचिंग रिलैक्सेशन है, ओके, उसकी वजह से उसको पेन हो रहा है, मसल टेयर हुआ है, तो हम लोग उसको सूदिंग इफेक्ट देने के लिए, जैसे कि और केमिकल रिएक्शन नहीं हो और उसका जो नस फटे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर कम करने के लिए आइस पैक लगाते हैं। Yes, sir. And sir, after football, like practice also, some people like राइट, तो उसका मतलब क्या है, बिकॉज वो जो हीट है ना, उससे क्या होता है, दर्द हो रहा है, आइस पैक्स लगाने से थोड़ा सा मसल्स का जो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा और मसल जॉइन हो सकती है, जॉइन है एटलीस्ट, और टेयर ऑफ नहीं होगी लिगामेंट्स और लाइकवाइज। अपन ये पॉइंट पे आ गए, तो लिक्विड, अब तुम फर्दर हीट कर रहे हो, लिक्विड का जो काइनेटिक एनर्जी अब बढ़ता जा रहा है, मींस व्हाई टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लिक्विड में बढ़ता जा रहा है, उसका एनर्जी बढ़ता जा रहा है, मॉलिक्यूल्स और ये फॉर एग्जांपल एनर्जी लेके एक दूसरे से, फॉर एग्जांपल टकरा रहे में एक दूसरे को कोलैड करके अपना बॉन्डिंग ब्रेक करने की कोशिश करें, ये पॉइंट पे उसका काइनेटिक एनर्जी लिक्विड का हाईएस्ट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच, 100, हाँ ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में क्या देख रहे हो, इमीडिएटली लिक्विड जो है, ओके, जिनका अट्रैक्टिव फोर्स ऑलरेडी वीक हो गया था यहाँ पे, और भी वीक हो गया है, ये पॉइंट पे ऑलमोस्ट, यू नो, फॉर एग्जांपल अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो 1 किलोग्राम लिक्विड है, ठीक है, 1 किलोग्राम लिक्विड है, उसका पूरा अट्रैक्टिव फोर्सेस हम लोग ब्रेक कर देंगे, और जैसे पूरा जो एनर्जी हम लोग के पास मिल गई और सब एक दूसरे से ब्रेक हो गए, वो पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सब उड़ जाएंगे, राइट ना, so that means that will happen, what that time the boiling process will take place, that is boiling का मतलब क्या है, liquid totally will convert into vapor, and at that point all the forces are so much, you know, broken down, they're no longer liquid, and at that point temperature will remain constant, because वो क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रहे, पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहे हैं, वो लोग अट्रैक्शन धीरे-धीरे कम कर दे रहे हैं, and then at this point after some time, that means अगर ये एनर्जी कितना ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर 120 है इधर, ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 200 है, सपोज हो गया, और यहाँ पे तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल 740 हो गया है, चलो 740 हो गया टोटल, तो 740 minus 200, 540 कैलोरीज पर ग्राम, तो 5,40,000 कैलोरी पर किलोग्राम, इतना हीट उसने ले लिया, absorb कर लिया, to convert liquid into vapor without the changing temperature. This is called boiling process. That means you can go like from solid to vapor. with the temperature change. Like melting. Yes. फिर एक plateau form होगा, फिर उसका there is one state से तो ये state से दूसरा state में आ जाएंगे, पर यहाँ पे एक particular plateau form होगा जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, भाई, जो भी एनर्जी जा रहा है वो अट्रैक्शन में लग रहे हैं, सो अट्रैक्शन में उनका जो इंटरनल वर्क है उसको कन्वर्ट कर रहा है, हाँ, Today in my teacher also if we take like amount of material we draw out in the container and keep it normally here maybe or like not in the soil in the right or something, but you can keep anywhere, and after 2 days or 3 days we will, if you see the like the amount of water will become less, evaporation, yes, वो evaporation वो अलग है, ठीक है, वो भी है, और ये सिखाएंगे ना आपको latent heat, नहीं सिखाया, latent heat of vaporization or latent heat of fusion is nothing but what, it means that it is the heat required by 1 kilogram of solid to convert into liquid at the same temperature or at its melting point. It's called as latent heat of fusion. Latent of vaporization means it is the heat required by 1 kilogram of liquid to change into its vapor at boiling point. यानी एक particular point पे होगा boiling point या melting point, तो इसको क्या बोलते हैं, latent heat of vaporization. That's why older citizens when they actually what have back pain, तो उन लोगों को water bags लगा देते हैं, क्योंकि वो ये वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे joint pains हो रहे हैं, joints की वजह से joint जो पेन होते हैं, ओके, वो क्या हो जाता है, उसका जो liquid है सूख जाता है,
ठंडी की वजह से, या वो क्या बोलते हैं सॉलिड हो जाए, तो हम लोग को लुब्रिकेंट चाहिए, लुब्रिकेटिंग चाहिए। तो क्या करेंगे, हॉट वाटर बैग्स क्या करेंगे, उनके पास वेपर के वो स्टीम बैग क्यों ले लेते हैं, बिकॉज उसमें 540 कैलोरीज ज्यादा है। 500 कैलोरीज ज्यादा है तो क्या, 540 कैलोरीज ज्यादा है तो मींस व्हाट, वो हीट से क्या होगा, जो उसके जो लिक्विड है दो बोन्स के बीच में, ओके, वो क्या होगा, थोड़ा मेल्ट फॉर्म में रहेगा और उसकी वजह से फ्रिक्शन कम होगा, बोन्स में पेन कम होगा। That's why we take hot water bags. You have the ice cold packs, ice packs. You have steam packs. You have what, you know, for example, hot water packs. हाँ, और नहीं, बहुत important है। तभी आपको concept, हाँ, हाँ, after that. There are the random numbers, the random letters, alphabetically. Which one? Written there. BE. No, there. Yeah, degree Celsius. Yeah. Temperature. अच्छा, zero. ये टेम्परेचर ऊपर से नीचे टेम्परेचर लिखा है ना, रैंडम लेटर्स नहीं, टेम्परेचर ऊपर से पढ़ने का। y एक्सिस मींस ऊपर से नीचे, x एक्सिस मींस लेफ्ट टू राइट, कैलोरीज, हाँ, सॉलिड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, इंक्रीजिंग का साइन मालूम है आपको, और टेम्परेचर इंक्रीजेस, T मींस टेम्परेचर, K मींस काइनेटिक, P इज पोटेंशियल एनर्जी। So you have written solid KAT. हाँ, Solid KAT. solid Ke greater than Ke greater, T greater means as you increase the temperature, kinetic energy increases, temperature increases. Solid potential energy increases. Here kinetic energy increases. Here potential energy. Then create.
इधर ये वाला latent to vaporization, liquid to vapor, boiling, potential energy, liquid, kinetic energy increases. हो गया? ये लिखा? वो लिखा? क्या? टेम्परेचर, इसी का टेम्परेचर कम करो, इतना है भी। बराबर है, क्योंकि आपके 18 पर, अरे अभी तो लड़का नहीं है ना, अभी तो चलेगा ना, तो जब लड़का रहे तभी चलो। क्या क्या बोल रहे हो? Melting solid to liquid means 1 kilogram of ice, okay, solid into liquid, heat required is 180 calories per gram or 80,000 calories per kilogram. Done na? That's good. Yeah. Now, one important thing, effect of pressure also we'll see, and then we'll read together this particular part. Okay. What is this effect of pressure? You know very well. ये effect of pressure क्या है basically? You know very well effect of pressure. ठीक है? Effect of pressure. Now, relax, nothing to do. ले लो आराम से. इधर यहाँ पे I've got a gas enclosure cylinder. You get it? Gases are actually what are quite far apart. So they enter molecules. So what happens? The forces of attraction of weaker. Now I want to liquefy these gases back into liquid. Gases को हम लोग liquefy करना है. तो क्या करेंगे? We apply the pressure. ये piston से हम लोग क्या करेंगे? गैस को push करेंगे. जिससे गैस को push करेंगे, तो क्या हो जाएगा? Gas has to occupy lesser volume. Yes or no? So in other words, these gases will come closer. Yes or no? Yes, sir. Once they come closer, they start rubbing each other. If they start colliding with each other.
and due to heat, definitely. Because, for example, when they heat, so that means temperature will actually what was when they get heated up, they will start giving out heat. When they start giving out heat, I mean, like for example, because of heat, they may vibrate more. हम लोग क्या करेंगे इसको lower temperature पे लेके आए. Means by keeping the temperature low, these gases, what they will do? They will come closer and get liquefied. Right now? तो क्या हो जाएगा जब टेम्परेचर लो रखेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स के जो एनर्जी है वो अपना ये बाहर का जो भी वेसल है जिसमें हम लोग ने जैसा कोई लिक्विड रखा है ओके लो टेम्परेचर पे वो हीट एब्सॉर्ब कर लेगा और इसकी वजह से गैस कूल डाउन हो जाएगी यस और नो एंड दे विल रिमेन क्लोजर एंड व्हाट दे रिमेन क्लोजर दे विल बिकम व्हाट लिक्विड and this is nothing but what that means by applying a very high pressure we have converted this gas into what we have compressed this gas in the liquefied form. इसको क्या बोलेंगे liquefied compressed gas yes or no okay or liquefied what or we can say for example compressed natural gas yes or no या अभी नेचुरल गैस तो शायद गैस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे लिक्विफाइड कंप्रेस्ड गैस बोल सकते हैं जैसे अपना गैस सिलेंडर ठीक है ना अब इसको क्या कर सकते हैं और कंप्रेस करके और टेम्परेचर लो रख के इसको सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं बाय कीपिंग द प्रेशर हाई प्रेशर पे अप्लाई करके लो टेम्परेचर ओके सो दैट इज सपोज दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड carbon dioxide will not convert into liquid it will convert directly into what solid carbon dioxide as it would in the high temperature so can we take it like an example of diffusing diffusion deep freezing yes deep freezing and it will convert itself into solids yes deep freezing but you have to apply pressure also वहां पे क्या होता है एक लिक्विड को तुम अपना सॉलिड में कर देते हाँ खाली ओनली टेम्परेचर बट अगर तुमको गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है फिर अपना प्रेशर ऑल्सो हाँ this gas is called as what now this is solid carbon dioxide and ये solid carbon dioxide को क्या बोलते हैं dry ice yes so that's why that fire extinguisher you must have seen in a wedding or occasion, I've seen like they're poured in Rinka or something, dry ice. Right. Some people eat it. Right. And then you get some kind of yes. So that is nothing but it converts directly to vapor without passing into liquid. So like a solid carbon dioxide because it is not actually what it looks like water. It looks like ice. It is not like ice. It is solid carbon dioxide which is called as dry ice. Solid plus carbon dioxide. हाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सीधे हम लोग ने सॉलिड में कन्वर्ट किए बाय अप्लाइंग प्रेशर अप्लाई करके एंड कीपिंग द टेम्परेचर हाँ यस कंप्रेसिंग मींस कोई प्रेशर अप्लाई करके प्रेशर एंड कीपिंग द टेम्परेचर लो क्लियर एंड दैट्स व्हाई यू फाइंड फॉर एग्जांपल व्हेन यू टेक सम आइसक्रीम ओके उसको पैकिंग किससे होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और जैसे वो हीट एब्सॉर्ब करता है ठीक है ना मींस टू कीप इटसेल्फ इन द सॉलिड स्टेट it actually what gives out heat sorry to convert into what for example into gaseous carbon dioxide absorbs heat तो धीरे थोड़ा सा वो आइसक्रीम क्या हो सकता है मेल्ट हो सकता है लेकिन जब तक वो सॉलिड फॉर्म में है तब तक वो आइस सॉरी दैट कुल्फी और व्हाटएवर आइसक्रीम इज देयर इट विल रिमेन इन द सॉलिड स्टेट ओनली दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस ठीक है तो यहाँ पे प्रेशर इंपॉर्टेंट देन वन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज कॉल्ड इवेपोरेशन What is evaporation? Evaporation is basically what a process of converting, okay, a liquid into vapor at room temperature. Room temperature में ये process होता है. Like suppose you are just now you ask me a question. You take a bowl and just keep some water, and come after a few days. Somewhere you adjust, and therefore what is happening? The particles which are there over here. इन लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज्यादा रहता है व्हाट दे डू दे टेंड टू एस्केप दे ब्रेक द फोर्सेस एंड दे एस्केप थोड़े दिन के बाद क्या होगा लेवल कम होता है जस्ट लाइक इन फिश टैंक आपने फिश टैंक देखा है अपना या फिश टैंक जो अपना नॉर्मल घर में रहता है तो फिश टैंक हां एक्वेरियम जैसा
तो उसमें वो जो लेवल है जो आपने पहले पानी भरा था उससे लेवल जब नीचे आता है तो ऊपर एक थोड़ा सा ऐसा डर्ट टाइप लेयर फॉर्म होता है ना नॉट ओनली इन फिश टैंक कोई भी लाइक ट्रांसपेरेंट या चाय भी देखो चाय जैसे तुमने चाय का ग्लास देखोगे तो उसका जो ब्राउन कलर है जहां था वो थोड़ा इवेपोरेट हो गया तो थोड़ा नीचे या तुमने पी लिया और फिर रख दिया बाय चांस then that level is being seen over. That means what is important over here, this is called evaporation. Now this evaporation depends upon certain factors, depends upon temperature. If the temperature is high, okay, then evaporation is more. Likewise, in place of this bowl, you actually what place one, let us say for example a thali, and you place some water, the evaporation over here is more. Why? Surface area is more. Like suppose you want to sip, for example, coffee, but in the cup that coffee is very hot. So what do? You put in the plate and then drink it. What is that? It is because, and then you actually what blow the wind also. Why? Because ऊपर वाले जो first layer है, lot of heat is there. That's why आपको वहाँ पे फूंक मार के वो चाय पीना पड़ रहा है क्योंकि आपका ये फॉर एग्जाम्पल जो होट ये सॉरी लिप्स है वो गर्म नहीं होते या उसको ये नहीं लगे झटका नहीं लगे दैट मींस व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर सरफेस एरिया also helps in evaporation. That's why clothes are actually what always spread out, wet clothes for drying. Yes. Surface area. Likewise, agar suppose आपको for example, suppose tomorrow you have to go to school and tomorrow suppose for example uniform wet hai. What mommy does? She actually what for example keeps under the fan. Yes, sir. So with the wind velocity, okay, evaporation becomes more. Right now? And then surface area should be more, temperature should be high. Likewise, humidity should be less. What is humidity? Humidity का मतलब for example बारिश में देखिए बारिश में आपका कपड़ा सूखता ही नहीं है क्यों? It is because humidity is more. Because already vapors are more. What happens? Moisture, yeah. And then moisture, ये भी moisture देते हैं वो भी तो moisture क्या हो रहा है? Already saturate कर दिए. These moistures are not able to come out. So evaporation is less in the case of when the humid weather is there, especially in the winter, sorry, rainy season. So ये evaporation. So let us read that. Okay, अब यहाँ effect of temperature पहले देखते हैं. Right from effect of temperature. हाँ? Yes. नहीं पहले हम लोग read कर लेते हैं. हाँ ये लिखना है ना? ये लिखा आपने? नहीं. देखो. टेस्ट का भी रीडिंग करते हैं अभी टेस्ट का तुम लोग ने अच्छा लिखा है हाँ टाइम इज अप आई थिंक सो 4 मिनट है तो चलो पहले टेस्ट का रीडिंग करते हैं और उसके बाद तुम लोग ये लिख लेना ये लिखने की जरूरत नहीं है देयर इन द बुक ठीक है जस्ट हाँ हाँ differentiate between solids, liquids, and gases. Solids, different shape. It has different shape and cannot be easily compressed. yeah They are rigid and diffuse into each other very easily. yes Less space between them. very good then It is liquids, not a definite shape, but can place into any shape if poured into any random container. Yes As example, gases. vessel yes They can be easily compressed. They are not rigid. They can be diffused very easily. absolutely Yes. Gases. नहीं पढ़ो तुम Gases. बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हो चलो They then don't have a definite shape. As therefore in liquids also the same. They have more spaces between them. They are not rigid at all, and they can diffuse. yes Very they can diffuse very easily Yes. solids cannot Yes. I told you gases. Gases. They can diffuse. Number question 2. Explain what's the एक एक जन रीड हाँ. फर्स्ट क्वेश्चन तुमने इन्होंने बोल दिया तुमने चेक किया कोई आंसर लिखा है इन डिफरेंट यानी सम पॉइंट्स माइट बी डिफरेंट चलो ठीक है बट एनी पॉइंट यू वांट टू टेल कि तुमने अलग लिखा है हाँ चलो यस सेकंड क्वेश्चन है गुड सो राइट ऑन 9 मार्क्स फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन पेंसिल से लिख लो या पेन से लिखना है पेंसिल then second Explain what's the stable ground for atoms, even if elastic quite a bit.
What can be the first of the city due to the large independent which has kinetic energy. Which has Kinetic energy. ये देख नहीं एयर जरा ये हो रहा है कि और सिजलिंग फूड में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है Yes. Due to the large interval space between the air which has kinetic energy. उसमें क्या लिख रहे हैं हॉट सिजलिंग फूड जो है ठीक है उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है फ्लेवर के पास that's why they are able to move from one place to the other with a greater distance right ना Yes. but वही cold food रहेगा तो they will to travel faster because they are having less kinetic energy so diffusion is slow diffusion is there but slow so in that case the diffusion is fast next question Me. question बाकी है अभी हाँ क्वेश्चन 3 में क्या है पहला Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी पहले तुम काइनेटिक एनर्जी पढ़ोगे शी विल रीड रिजिडिटी पार्ट हाँ Due to in solids, intermolecular spaces are small gases and same as compared to liquids. yes Because of intermolecular spaces in gases are more liquid than solids, kinetic energy of gases is higher than other groups. yes okay चलो good Solids are rigid, it will be more pressure only there. In case of liquid, they are not rigid, they take the shape of the component they are kept. very In good case of gas, they are not rigid, they can also take the shape into the very good. yes ठीक है ये हो So गया I am getting solids are rigid. If a strong force is applied on them, they can break. वही बोला In case of liquids yes they can take the shape of regular. yes In solids, they are rigid. yeah okay now see page number 3 page number 3 Based on पेज नंबर 3 और 4 आपको रीड करके आना है that's what I like. पेज नंबर 3 और 4 ठीक है हाँ बुक का टेक्स्ट बुक का रीड करके नहीं खाली रीड करके लर्न करके नहीं ठीक है पेज नंबर 2 3 3 4 एंड 5 उधर तक ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज़ ऑफ ये ऑफ कोर्स विल रीड अगेन तो 3 4 एंड 5 में एक्टिविटीज के पहले आपको रीड करना है एक्टिविटीज के पहले हाँ उधर तक 5 बस खाली रीड करके ओके children so we'll stop over here next time we will आगे लेंगे ठीक है In number change its state. हाँ matter can yes from there ठीक है चलो thank you definition can come definition वही अभी रीड करना है 3 4 5 है ना जब तुम रीड करोगे ना तो तुमको उसमें आ जाएगी चलो